हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एक नानो टेरेरियम इकोसिस्टम को बनाते हुए देखेंगे। In this video, I'll show you how I created this self-sustaining ecosystem inside a nano glass box. This ecosystem supports plants and various invertebrates which are coexisting and thriving in this habitat created for them. इस इकोसिस्टम में हमारे लगाए हुए भिन्न प्रकार के पौधे और कई प्रकार के अकशेरुकी जीव स्वस्थ है तथा फल फूल रहे हैं। A substrate mix has been created using cocoa fiber, orchid bark, worm casting, gardening soil, charcoal, and sphagnum moss. Quantity and ratio has been used as shown in this video. We already witnessed presence of few invertebrates in the worm casting mix. हमने इस प्रोजेक्ट के लिए एक 7.5 इंच का ग्लास क्यूब इस्तेमाल किया है। I'll start by pouring in some leca for the drainage layer. I'm using my hand to spread it out and try and make it nice and flat so that there is no high or low point. With that done, I can place a substrate barrier which will help keep the substrate and drainage separate. अब हम इसके ऊपर टेरेरियम सबस्ट्रेट को डालेंगे। इस्तेमाल हुए सबस्ट्रेट की किस्म और मात्रा इस वीडियो में शुरुआत में दी गई है। It's a small terrarium, so the drainage layer doesn't need to be too deep. हार्डस्केपिंग के लिए ड्रिफ्टवुड के इन टुकड़ों को अलग अलग एंगल्स में रखने के पश्चात एक आकार को चुना गया। हम इस हार्डस्केपिंग में ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच स्थित एक घर, उसके चारों ओर पेड़ पौधे और घाटी में हरे मैदान को दर्शाएंगे। हार्डस्केप इकोसिस्टम को सस्टेन करने के साथ साथ दिखावट में सुंदर और एक माइक्रो लैंडस्केप को दर्शाएगा। ये छोटा हार्डस्केप हमने अपने पिछले वीडियो में दिखाया था जब हमने नानो एक्वेरियम को बनाया था। इसे हम इस हार्डस्केप में इस्तेमाल करेंगे। I'll place this hardscape made of a rock and driftwood on top of this wooden piece, which will create an illusion of a rock with remains of a scraggy tree. इसे अच्छे से फिक्स करेंगे क्योंकि इसके साथ ड्रिफ्टवुड और कुछ छोटे डिटेलिंग जोड़े जाएंगे। This piece of driftwood will create an illusion of an old fallen tree. Let's see how it all comes together. There it is, all glued together. And it looks like this. And here comes our tiny house, on top of the mountain. A stone platform has been added to this hardscape, along with a vertical stone piece. कुछ बारीक डिटेल्स को ऐड करते हैं। Now, the major portion of the hardscape has been assembled. We need a tree-like structure to complete this scape. इस पे हम एक मॉस लगाएंगे जो एक छायानुमा पेड़ जैसा प्रतीत होगा। A moss will be placed on this platform, which will create an illusion of a tree. कुछ पत्थरों को इस स्केप में और जोड़ देते हैं जिससे इस आकृति को कंप्लीट किया जा सके।
अब हार्डस्केप तैयार है। Now that the hardscape is done, let's bring it to life. First, we'll carefully place the hardscape over the substrate. थोड़ा पानी का छिड़काव करेंगे ताकि सबस्ट्रेट और हार्डस्केप सही से सेट हो जाए। This moss has been locally collected. It is dense and will give the appearance of a carpeted floor. I will use this moss extensively in this terrarium built. This fern has also been locally collected. The next plant is called Legionandra meboldi green, which is commonly used in a planted aquarium. This will grow nicely in a damp and moist environment. I am relocating this plant, since I feel it will look nicer here. हमने सबस्ट्रेट मिक्स को मिट्टी के साथ मिलाकर इस छतरीनुमा आकार के ऊपर लगाया है। We will place Micranthemum tweediae over here. This will create the illusion of a tree. Next comes in Ritala ramosier florida, which is a beautiful, dark green plant. We are using golden silver Fidonia and Fidonia mini red vein that will add some vibrant colors to the terrarium. ये गार्डनिंग एंथुजियास्ट का पसंदीदा पौधा, जिसे पेपरोमिया कैपराटा या एमरल्ड रिप्पल रेड भी कहा जाता है, यहाँ एक फर्न लगाया गया है। एक्वेरियम हॉबियस्ट्स का पसंदीदा पौधा अनुबियस नाना गोल्ड। अब माइक्रांथमम माइक्रांथीमॉइड्स या सरल भाषा में पर्ल वीड को लगाएंगे। Fern moss are an all-time favorite choice for terrarium. I'm also placing few strands of zipper moss near the stairs. The variety of plants really add to the natural look, and I love how the driftwood and rocks bring details to the scape. I am happy how the plants and the hardscape are complementing each other. And now the best part, introducing our tiny invertebrates into this ecosystem. I have introduced millipedes, orange and white springtails, isopods, earthworms, and non-venomous symphyllid into this ecosystem. They will help in keeping this ecosystem clean and healthy. They are even more important in this terrarium, as I have used a good amount of wood, which is prone to growing mold. They will eat the mold and poop it out in the form of nutrients that the moss and plants can use to grow. All the vertebrates introduced in this ecosystem are active and are often seen exploring their way around. This makes the terrarium appear to be lively and gives a glimpse of its inhabitants. एक महीने के पश्चात सभी पौधे और इनवर्टेब्रेट्स फल फूल रहे हैं। आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये टेरेरियम बिल्ट कैसा लगा और आप अगर इसे बनाते तो क्या अलग या बदलाव करते। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।
Please do share, like, and subscribe.